Gopalaswamy. We are your co-hosts for the evening. Thank you everyone so much for coming. So, this is the third annual 100,000 Poets for Change in Bangalore. It was started by Shika Malavia 3 years ago, and we're so excited to have taken over the reins from her, but also very humbly thinking about her legacy here tonight. So thank you so much for coming. We have about 16 poets, and they're each going to read for about 5 minutes about themes of peace, change, hope, and conservation. Okay. Everyone excited? Yes. Yeah? Can we get a round of applause for all of us? So, 100,000 Poets for Change came about with Shika. Shika and Lakshmi have been an integral part of 100,000 Poets for Change. Lakshmi, who runs Atta Galatta. We'd like to thank her and Lakshmi and Subodh. Subodh, are you here? No, he's not. Oh, they run away. They run away. So it started with Lakshmi and Shika being an integral part of this. And poetry and change, you might wonder, what does poetry and change have to do with each other? It's one thing to sit down and read the news, but it's completely different when change is spoken in verse, when change is spoken in terms of music. And this year we have musicians and writers come together for a performance. We have three such performances, and we're looking forward to that. It's the first of a kind where we have three. We've always had one or two, but we today have Bharat and Vijay and Pramod putting up their ensemble together. So yeah, we have some fun times ahead. So we're so glad you all are here. I'm going to introduce our first poet. Our first brave soul is Saurav Roy. He's here. Yeah, I hope he's here. He's reading. So, Saurav Roy has authored 3 books of Hindi poems and has published in almost every major Hindi literary magazine. He has won several national level awards for poetry. A political columnist in London based NRI magazine, he works as an engineer for Brocade Communications. His future publications include an anthology of poets from Bangalore, published by Atta Galatta, and a translation of Howard Zinn's plays. So please welcome Saurav Roy. Thank you. I will start with reading a few poems of mine. ये जो पहली कविता है, इसका नाम है संतुलन. This basically describes, it can be related to a person's state of mind or the state of a system or a country. It can be related to a broad aspect of things. Santulan basically means balance. So, start with it. Santulan. मेरे नगर में मर रहे हैं पूर्वज, खत्म हो रही हैं स्मृतियाँ, अदृश्य संवाद. किसी को नहीं याद हम गुलाम अच्छे थे या आज़ाद. बहुत ऊंचाई से गिरो और लगातार गिरते रहो तो उड़ने जैसा लगता है. एक अजीब सा समन्वय, डायनामिक इक्विलिब्रियम. अपने उत्थान की चमक में ऊब रहे या अपने अपने अंधकार को इकट्ठी रोशनी बदलाकर डूब रहे हैं. हमने खो दिए वो शब्द जिनमें अर्थ थे, ध्वनि रस गंध रूप थे, शायद व्यर्थ थे. शब्द जिन्हें कलम लिख ना पाए, शब्द जो सपने बुनते थे. हमने खोए चंद शब्द और भरे अभिनत ग्रंथ. वो ग्रंथ शायद सपनों से डरते थे. थोड़े हम ऊंचे हुए, थोड़े पहाड़ उतर आए. पर पता नहीं इस आरोहण में हम चल रहे या फिसल रहे. हम दौड़ते रहे और कहीं नहीं गए. बांध टूटने और घर डूबने के बीच जैसे रुक सा गया हो. यहाँ इस क्षण न चीख न शांति, जैसे ठोकर के बाद का संतुलन. It's called abode, and abode is a term that is sometimes used to translate the Buddhist idea that there are these 4 expansive mind states or houses. So one house is considered to be loving kindness, one house is compassion, one house is sympathetic joy, which means the joy that you feel for somebody else's happiness, which we maybe don't always feel. Sometimes we might feel jealousy or
softest, warmest blankets, sweet, endless light of the plains, and a stack of dishes to break. Tell it to make itself at home. It will anyway. Let it roam through the dungeons where compassion is wrestling suffering into chains. Let it wander through the kitchen where sympathetic joy whips up confections and spaghettis for all beings. Let it piss in the pots that equanimity and generosity have been disinfecting on their knees. Let it whirl through the study, ruffling the rondos that loving kindness composes each dawn. Notice me, it wails. Notice where it tells the truth, when it lies. Honor it like a divine guest, or your beloved, soft-hearted child, the one who will not let you rest until you have made room in your house for one more stray cat, one more bastard child or thought, unwanted, with nowhere else to take refuge. कि सब ताने हैं तीर कमान, सब ताने हैं तीर कमान गंगा तेरे घाट पे, सब ताने हैं तीर कमान गंगा तेरे घाट पे, सिकुड़ गया है हिंदुस्तान गंगा तेरे घाट पे। और काशी को जीता, देखिए लड़ाई कैसी हो रही है। लगा था सारा हिंदुस्तान पानीपत की बाद अपनी लड़ाई बनारस में हुई के साथ लड़ा, तो सिकुड़ गया है हिंदुस्तान गंगा तेरे घाट पे। और काशी को जीता जिसने भी, पाप सभी भूल जाएंगे, अंधों की है सही दुकान गंगा तेरे घाट पे। और उसके बाद मैंने कहा कि बाबा तेरी पूजा को, विशेषज्ञ की जमीन है वो, कि बाबा तेरी पूजा को देश भर से आए हैं चंद दिनों के कुछ मेहमान गंगा तेरे घाट पे। और कोई टोपी, पता टोपी वालों की नगरी होने वाली थी, कोई टोपी बांट रहा है, कोई टोपी फाड़ रहा है, सबकी अपनी सही दुकान गंगा तेरे घाट पे। और देश को छोड़ो, देश का छोड़ो, अब काशी में आओ मिलकर शामिल हो, देश का करने पिंडादान गंगा तेरे घाट पे। और आखिरी लाइन है कि वो गंगा जमुनी की तहजीब है, वो चुनाव के अलावा किसी एक और चीज़ से जानी जाती है। उसको मैंने आपकी दो मिसरे हैं उसमें कोशिश किया डालने का, आपको नजर आ जाएगा कि मैंने इशारा करने की कोशिश की कि देश का छोड़ो अब काशी में आओ मिलकर शामिल हो, देश का करने पिंडादान गंगा तेरे घाट पे। और नादो वादों और नफरत से अब भी पूरी अछूती है बिस्मिल्लाह की मीठी काम गंगा तेरे घाट पे। Morning I'm ready to walking under a cloudy sky. As I climb the street, the rain came pouring down. As I look for shelter, saw a broken shed, and something cold and chill standing in despair. I see a little thing looking at me from above. I can see his eyes, yellow to be held close to my heart. So I take him in my hands, just embrace him to the soul. Let him down to go, but he wouldn't let go. He is lying out, yeah. Never a smile on my face, living on what was scared from, flying all that's about. Never knew her story of fragile and frail, but walking with her bare feet, and she goes at her sea. Then one evening, see her fighting with a man from the killer pound. In her hands I see to fight and to feel a bunch of little ones. On the night of the dawn, I hope to find her here, but she was not alone. A little white eyes showing out to me. By the middle of the dawn,
It's always busy, mother. This night bazaar throngs with men, women, children who celebrate the Ferris wheel, simmering tender lamb kebabs, taftan, Maghrebi mint tea and hookah, sometimes under a generous bulbous silver, sometimes under a miserly crescent. As crowded is the fragrance from bouquets and incenses. It's always busy, mother. Don't intoxicate yourself with aromas, gossip, the forbidden cummerum. Hold your treasure close to your breasts. In this bazaar, also move urchins and well-dressed thieves with silken tongues. Doesn't fear of losing your own ever grip you? It's forever busy, mother. Your handmade ceramic glistens as always. Plates, pots, goblets, dressed in designs I grew up in. The flowers and folds of my tunic and salwar are in this glazed earth. Please don't, mother. No, no, I had screamed when you sold me for a handsome sum and a potter's wheel to an ugly, beady-eyed virgin. My virgin tears failed to moisten your baked clay and heart. You're always busy, mother. You didn't recognize the stranger who flawed and refused each of your perfect creations with every attempt you made to inflate the buyer's ego. Hatred and bile rose like a volcano somewhere in the swollen river of molten emotions. Pity survived. Why? Mother, why? Handmade ceramic fetches a dear price. How many children have you sold tonight? It's about dedicated to all the Bakaras. Bakara in the sense of Hindu-Muslim. They fight on the name of religion in the hand of these politicians, and I call them Bakara. They really think there is going to be a mandir and a temple in Ayodhya. वहाँ पे कभी मंदिर बनेगा और इन बकरों को ये पता नहीं है कि खिलाया पिलाया जा रहा है ताकि ईद में ये काटा जा सके. So basically, bit of kind of satire. I hope I'll be able to. बकरे सारे खुश हो रहे हैं जब भी मंदिर की बात आती है या किसी भी रिलीजन की बात आती है वो सारे खुश आते हैं. हाँ हाँ हम करेंगे भाई, हम करेंगे, मारेंगे. बकरे सारे खुश हो रहे हैं, कुछ अच्छा होने वाला है. सुना है ईद आ रही है, मंदिर भी बनने वाला है. बकरे सारे खुश हो रहे हैं, कुछ अच्छा होने वाला है. सुना है ईद आ रही है, मंदिर भी बनने वाला है. हर बार यही क्यों होता है, जैसे बांधा जाता है. हर बार यही क्यों होता है, जैसे बांधा जाता है. कुछ किताबों, कुछ इतिहास होता है, इनको काटा जाता है. क्या बात है. And there are so many clever बकरे. उनको पता है कि हाँ हम शहीद हैं, ठीक है. कुछ बकरे ये भी सोच रहे चलो अपना बलिदान से. कुछ बकरे ये भी सोच रहे चलो अपना बलिदान से ही शहीद तो हम कहलाएंगे वो अपने भगवान से. शहीद तो हम कहलाएंगे वो अपने भगवान से ही. पर ये तो रस्म उत्सव की. बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ बकरों को काटा जाता है, पर ये तो रस्म उत्सव की. ऐसा ही होता दिखता है. मांस शहादत करता है, हम दुकान में मिलता है. पर ये तो रस्म उत्सव की ऐसा ही होता दिखता है. मांस शहादत करता है, हम दुकानों में मिलता है. पर अपना हिसाब भी लगा रहा है, जो दुकान का रहा है. सुना है ये गाड़ी है, मंदिर भी कर रहा है. It's about something when we all are spectators. When we see something, we get anger, but we do nothing. We remain in the silence, see what happens. We feel some kind of bitterness, anger, but still no action, just watching. So whenever you will be in this position, you will see something happening wrong, and you are silent. You feel these words. It's in Hindi. We does not understand to someone, but with the words. In the anger, okay, in anger, presenting as like, okay, तुम आज भी चुप हो, तुम आज भी चुप हो, सदियां बीती सालों गुजरे, तुम
पुश्ते चुक गई तुम्हारी चुप्पी की कीमतें। लाशें चुप हो जाती, लाशें चुप हो जाती है, पर तुम चुप होकर लाशें। तुम्हारे पुरखे निःशब्द मरे, पिटे और लुटे। जब जिस्म है तुम्हारा, अजब जिस्म है तुम्हारा कि बस मेरे गांव सदैव ताजा दिखते हैं, और तुम उन्हें मरहम तक नहीं दिखाते, और तुम उन्हें मरहम तक नहीं दिखाते। तुम्हारी चुप्पी फिर कोड़ा बन उधेड़ देती है तुम्हारी चुप्पी फिर कोड़ा बन उधेड़ देती है तुम्हारी खाल, खींच लेती है आंकड़ियां तुम्हारी, खींच लेती है आंकड़ियां तुम्हारी, पर तुम्हारा मुंह जरा सा खुलता है, जीभ आती है बाहर, फिरती है सूखे होठों पर कुछ देर, पर फिर लौट जाती है, फिरती है सूखे होठों पर कुछ देर, पर फिर लौट जाती है। ताज्जुब है आवाज नहीं करती, ताज्जुब है कि आवाज नहीं करती, तुम्हारा मुंह रह जाना, साइलेंस, तो तुम्हारा मुंह रह जाना तुम्हारी नस्लें, तुम्हारा मुंह रह जाना तुम्हारी नस्लें भुगतती है। जान ही नहीं पाती आवाजें जादुई, जान ही नहीं पाती कि आवाजें जादुई होती है। तुम तो जानते हो ना कि आवाजें क्या होती है, बेशक जानते हो। तुमने सुनी है कुछ आवाजें जो तुम्हें आदेश देती है, चुप करवाती है और खड़ा करती है एक दूसरे की। तुमने तो देखी है आवाजों की ताकत, तुमने तो देखी है आवाजों की ताकत। फिर क्या प्रतीक्षा है तुम्हें कि कोई और आवाज निकाले तुम्हारे हिस्से की? या फिर तुम्हें ज्ञान ही नहीं कि तुम्हारी आवाजों की शक्ति भी उतनी ही है, या फिर तुम्हें ज्ञान ही नहीं कि तुम्हारी आवाजों की शक्ति भी उतनी है जितनी तुम्हें डराने वाली आवाजों में, जितनी तुम्हें डराने वाली आवाजों में है। अरे कब समझोगे कि चुप रहने ने काली खेत खोद दी है पीढ़ियों की आजादी, काली खेत खोद दी है पीढ़ियों की आजादी